हेलो जी, ठीक हो आप सब? ओके, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट फॉर्मिंग एन इक्वेशन फॉर अ प्लेन इन स्पेस, राइट? अब इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं एक प्लेन। लेट्स से दिस इज़ अ प्लेन, राइट? अब इसके अंदर इस प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ तो हमारा पॉइंट जो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा, लेट्स से एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है वो पॉइंट। दूसरा, इसको हमने नोट किया हुआ है पी नॉट से। दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो इस प्लेन से 90 डिग्री पे हो, तो दैट वेक्टर, ठीक है, दैट वेक्टर, वी नीड दैट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो इस प्लेन से। तो जब क्यों क्यों चाहिए हमें ये दो चीज़ें, क्यों चाहिए? तो एक तो हमें चाहिए कि हमें पता चले कि यार एक ऐसा पॉइंट जो प्लेन के अंदर लाई कर रहा हो, राइट, दैट वी नीड। दूसरा, जो वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, वो इसलिए चाहिए ताकि हमें पता चले कि यार ये प्लेन किस किस इसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसकी टिल्ट कितनी है। ठीक है ना, मानते हो? फॉर एग्जाम्पल कि अगर अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं ये कैलकुलेटर है, लेट्स कंसिडर दिस एज अ प्लेन, और इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि ये इस तरह से कितनी कितनी इसकी टिल्ट हो रही है, तो कितनी क्या ओरिएंटेशन है, तो मैं कंसिडर करूँगी इसके इसके परपेंडिकुलर एक, मैं यहाँ पे पेन रख दूँगी। दिस पेन वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट? और जब फिर मैं इसको घुमाऊँगी तो मुझे आइडिया होगा, जब मैं इसको इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूँगी तो मुझे पेन से आइडिया होगा कि बेसिकली कि मेरी ओरिएंटेशन जो है वो प्लेन की क्या है, राइट? सो दैट इज़ वाई वी नीड अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ताकि हमें पता लगे कि कितनी टिल्ट है, कितनी ओरिएंटेशन है, क्या ओरिएंटेशन है उस प्लेन की, ठीक है? सो दैट इज स्पेसिफाइड, द टिल्ट इज बेसिकली डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से। नॉट परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक ही बात होती है, ठीक है? सो सपोज़ के लिए कि ये हमारे पास एक प्लेन है और इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है, और ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स मौजूद होंगे, इस प्लेन के अंदर, लेट्स से हम एक और पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इस प्लेन के अंदर, और इसको हम नाम देते हैं पी का। सो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स मौजूद होंगे, या जितने भी वेक्टर्स हम बना सकते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एन के परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज एन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट? सो वी कैन से दैट वी हैव अ वेक्टर पी नॉट पी, ठीक है? ये इस तरह से बन गया जो इस प्लेन के है। और इसका ये वाले वेक्टर्स, प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एन से परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज एन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सो दैट मीन्स कि दिस वेक्टर एंड this this n vector, they are perpendicular to each other, right? So एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। so जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, so उनका क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ज़ीरो हो जाता है। so p नॉट p डॉट, this is p नॉट p, ये this is vector dot vector n is equal to 0. So this is all we need for for finding out the equation of a plane in 3D. So this is all we need कि दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है कि इनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी से हम अपने इनकी कंपोनेंट फॉर्म निकालते हैं। दिस फॉर्मेशन इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और जो इसकी कंपोनेंट फॉर्मेशन होगी वो क्या करेंगे, पी नॉट पी हमारे पास क्या है, पी की कोऑर्डिनेट्स में से आप पी नॉट की कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट आई, ठीक है? इसी तरह से प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे प्लस जी माइनस जी नॉट के। ये आपका ये वेक्टर हो गया पी नॉट पी, और साथ में आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो एन का। एन हमारे पास एन, लेट्स से कि एन के कंपोनेंट्स जो हैं, लेट्स से वेक्टर एन इज इक्वल टू लाइक एन वन आई, एन टू जे और एन थ्री के। सो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वन आई प्लस एन टू जे प्लस एन थ्री के, और ये हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हम क्या करें हैं, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आई के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा एन वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर और ऐड कर देते हैं कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करा के ना, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एन टू इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस एन थ्री इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, ज़ीरो। सो दिस इज़ बेसिकली दी सिंप्लीफाइड कंपोनेंट इक्वेशन। कंपोनेंट इक्वेशन आपने अगर निकालनी है तो कंपोनेंट इक्वेशन इज़ बेसिकली दिस वन, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड component equation form, or this is simplified component equation form,
ठीक हो गया. So this is how we calculate the equation of a plane. You just need a point and you just need a vector which is perpendicular to the plane. Let's say for example, let's take an example. Let's say we need to find an equation for the plane, right, which is passing through the point. अब ये point हमें दिया हुआ है तो this will be p naught minus 3 0 and 7 and perpendicular to vector 5i plus 2j minus k. Let's say this is the question. We need to find the equation of a plane passing through this point and perpendicular to this vector. We just needed two things for that. Both of these things are available to us. The perpendicular vector is available to us and the point lying on the plane is available to us. So we need to do what we need to do. We need to find out this is our x naught, this is y naught, and this is z naught, and this is n1, 2 is n2, and minus 1 is n3. So in order to find out the equation, we just need to put in this simplified component equation formation. Okay, so n1 is 5, so x minus x naught, like it will be plus 3, plus n2 is 2 into y minus y naught, y naught is 0, and plus n3 is minus 1, like it will be minus 1, and z minus z naught is 7 equals to 0. So after simplification we get 2y minus z plus 7 equals to 0. So 5x 2y minus z, and 15 plus 7, what will be 15 plus 7? 22, and 22 equals to 0. So 5x. So this is basically your equation of the plane, right? So this is how it's done. You need to just learn what the formula is, and then you need to apply. You need to see what type of question you are given, you are given, what things you are given, and what things you are required to find out in order to put in your component form, simplified component form equation of a plane, right? Okay, that is it. Or the another example, you can do another example. Another example is like, what if we don't have a perpendicular vector? What if we just have points? Then what? How do we find the perpendicular vector from that? Let's consider an example where we are given different points. And let's consider another example. Let's say we have an example. We need to find an equation of a plane, sorry, for the plane which is passing through three different points. The first one is what z-axis, like 0 1 0 0 1, not z-axis, basically a point on. The second is on x-axis, and the third is on y-axis. uh, we need to find an equation for this plane. So if we plot it, how do we let's see how do the things become. A is like 0 0 1, like x is 0, y is 0, and z is 1. So this point is A, it's 0 0 and 1, right? And B is 2 0 0, like x is 2 1 and 2, and y is 0 z is 0, so this is point B. And C is 0 3 0, like x is 0 y is 0, and sorry, y is 3, so 1 2 3, and this point is C. So we need to find out a plane, we need to find out an equation of a plane which consists of all consisting of all of these 3 points. How do we do that? How do we find out a plane uh, consisting of this, consisting of all the 3 points? So we need to, for the equation of a plane, we have the equation of a plane. We need to have, like, the equation was this, right? This was like the vector, um, and this was the perpendicular vector. This was the vectors forming from
the points which is present on the plane, right? And this was the vector which was perpendicular to the plane. So we don't have that perpendicular vector. What we need to do, we can find out that perpendicular vector. How? Let's see, that's interesting. So first we need to calculate this p naught p. How do we do that? We just pick any two any two specific points. So, but first let's find out what the perpendicular vector is. If you remember, there was a certain thing like in the definition of cross product. Okay, when we take out the cross product of two vectors u and v, so the resultant is also a vector basically. And in the definition we wrote that whatever that definition is, basically we said that the cross product, this cross product of two vectors u and v is basically perpendicular to both u and v vector. Like if this is vector u and this is vector v, then the cross product of these two vectors will be like this. This is u cross v. Like this is perpendicular to this, u cross v is perpendicular to u, and u cross v is perpendicular to v also. So if we have two vectors, if we get two vectors, if we can form two vectors from these 3 points and take the cross product of those two vectors, we can find out the perpendicular vector, right? So let's say we can find out the two vectors first. Let's say we form vector AB and vector AC. If we can form vector AB and AC from these 3 points, we can do that. AB भी निकाल सकते हो, AC भी निकाल सकते हो. So after taking the cross product of these two vectors, the cross product of these two vectors will be the vector perpendicular to these. Okay, so it will automatically be perpendicular to our plane, to the plane containing these 3 points. Let's say we are constructing AB vector. We are constructing vector AB. This is first vector, and we are also constructing vector AC. This is our second. This will be our second vector. So the plane containing these two vectors, like the plane containing these two, the cross product of these two vectors, the cross product of these two vectors will be perpendicular, right? Will be perpendicular of from both of these two. So automatically it will also be perpendicular to the plane containing these two vectors, right? So if we calculate AB, if we find out what AC is, what AB is, and we take the cross product of these two vectors, we can that this cross product vector will be our n. This will be our n. This will be perpendicular to the plane containing these two vectors, right? So after calculating AB from determinant formation, and after containing AB with determinant formation, we get vector 2 0 minus 1. And after calculating AC from determinant formula, we have 0 3 minus 1. So calculating the cross product of these two, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला से नहीं है. ए बी और बी सी ए सी जो है सिंपल हमने वेक्टर्स फॉर्म किए हैं, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ बी फ्रॉम ए, एंड ए सी की निकालने के लिए सब्ट्रैक्टिंग द कंपोनेंट फ्रॉम सी फ्रॉम ए, राइट? So now we are taking the cross product. Now we use a determinant definition. So after applying the determinant definition, ए बी पहले है तो उसके कंपोनेंट्स आपके पास पहले आएंगे और इसके कंपोनेंट्स आपके पास बाद में आएंगे. सॉल्व करने के बाद वी गेट 3i plus 2j plus 6k, right? So this is basically our perpendicular vector, which is perpendicular to the plane containing these three points, right? So we have a perpendicular vector. We can choose any point from these 3 points and form our equation. So equation of the plane would be what, n1 into x minus x naught plus n2 into y minus y naught plus n3 into z minus z naught equals to 0. So n1, n2, n3 is basically this. This is our n1, this is our n2, this is our n3,
right? And we can choose any point for our base point. So I'm choosing a for our base point. So n1 is 3, x minus 0, n2 is 2, y minus 0, and n3 is 3, z minus 1. I'm choosing a for our, I chose a for our base point 0, 0, 1, where x naught is 0, y naught is 0, and z naught is 1. So after substituting everything, we have uh, wait, n3 was 6, so this is 6, or plus 6z minus 6. So we have 3x plus 2y plus 6z equals to 6 as our equation of the plane, right? So this is it. This is how it's done. Don't be confused if you have 3 points or if you have 2 points. You will be needing 3 points in order to calculate the equation of a plane, right? Because you need 2 vectors now, so you need 3 points for that. So you can calculate, you can compose 2 vectors, and then you find the cross product of those 2 vectors in order to have a perpendicular vector, and then just substitute the values. Oh sorry, बीच में okay, so and then you find the cross product in order to find out, in order to get the perpendicular vector to the plane, and then just simply put in all the values in the formula. So this is it. This is how it's done. It's a pretty long video, I know, but sorry for that. But okay, take care. I won't make it more long. Take care. Bye.